टुडे द मेन टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज़ प्लांट नोमेनक्लेचर। मतलब प्लांट्स का साइंटिफिक नेम देने का नाम जो है नोमेनक्लेचर्स है। प्लांट नोमेनक्लेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनमी। ये जो है अहम पहलू है टेक्सोनमी का। नेमिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। नाम देना प्लांट्स का इसके जो है सर्टेन रूल्स हैं प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल बोटेनिकल सोसाइटी। प्रपोज किया जाता है इंटरनेशनल बोटेनिकल सोसाइटी के तौर पर। ओवर अ पीरियड इज़ कॉल्ड प्लांट नोमेनक्लेचर। ये जो है पीरियड है प्लांट नोमेनक्लेचर्स के। दिस नेम्स आर यूजुअली टर्न्ड एज ए बोटेनिकल नेम। इन नेम को कहा जाता है बोटेनिकल्स नेम्स और द साइंटिफिक नेम, और इन्हें साइंटिफिक नेम्स भी कहा जाता है। जो प्लांट नोमेनक्लेचर से हम नाम देते हैं उन्हें बोटेनिकल्स और साइंटिफिक नेम कहा जाता है। दे आर इवॉल्व्ड एज ए बायनोमियल्स फ्रॉम द पोलिनोमियल्स एंड द वर्नाकुलर्स थ्रू द एज। बायनोमियल, पोलिनोमियल एंड वर्नाकुलर थ्रू द एज। उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर द मेथड्स ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल। मेथड जो है देना साइंटिफिक नेम जो है प्लांट और एनिमल्स का। मेथड्स ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। जो है नाम मुश्तमिल है दो पार्ट्स पर। इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायो मतलब टू, जो साइंटिफिक नेम है वो दो नामों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देयरफॉर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज बायनोमियल। साइंटिफिक नेम जो है ऑर्गेनिजम्स का ये हमेशा बायनोमियल होता है। नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स बिकम एसेंशियल। नाम देना ऑर्गेनिज्म का ये ज़रूरी है। मेनली फॉर थ्री रीज़न, तीन रीजंस की वजह से। टू रिमेंबर द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वी स्टडी। ख़ास ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं उसे याद करने के लिए। टू कम्युनिकेट द सेम विद द अदर एंड, कम्युनिकेट करना सेम का दूसरे के साथ। टू मेंटेन द साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन करना साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशंस को। गिविंग नेम टू ऑर्गेनिजम्स, देना नाम ऑर्गेनिजम्स को। इज़ इन प्रैक्टिस सेंस टाइम्स एंड इमोरल्स। उसके बाद हेयर द नेम यूज्ड इन अर्लियर डे। However, the name used in earlier day, नाम जो है इस्तेमाल होते हैं सबसे पहले दिनों में। और वर्नाकुलर्स नेम्स हैं इन लोकल लैंग्वेज में। एंड सच नेम्स हैव मैनी डिफेक्ट, इनके बहुत से नुकसान हैं। फॉर एग्जांपल दे डू नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते पूरी दुनिया में। दे टेंड टू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होते रहते हैं। फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, और एक ज़बान से दूसरी ज़बान में। इन सम सेंस ए कॉमन नेम इज़ अप्लाइड टू डिफरेंट प्लांट। कॉमन नेम जो है अप्लाई किया जाता है डिफरेंट प्लांट्स में। एंड द सेम प्लांट्स में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। सेम प्लांट को मुख्तलिफ नामों में। कॉमन नेम्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट। कॉमन नेम जो है अवेलेबल दस्तियाब नहीं है हर तरह के पौधों में। उसके बाद therefore there was a necessity to give scientific name। ये जो है ज़रूरी है देना साइंसी नाम। however the first introduced scientific names are polynomial। फर्स्ट इंट्रोड्यूस साइंटिफिक नेम जो था पोलिनोमियल था। दे वर मोर लेंथी एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डिफ़िकल्ट। ये लेंथी, डिस्क्रिप्टिव और डिफ़िकल्ट था टू रिमेंबर, याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स ग्रेविलोबैस्टस, ग्रैंडिफ्लोरा, एस्ट्रोलाइंस, लेटरल्स। बायनोमियल सिस्टम वाज प्रपोज्ड। बायनोमियल सिस्टम जो है प्रपोज किया गया। वेयर द नेम कंसिस्ट ओनली ऑफ टू पार्ट। नेम जो है मुश्तमिल है दो पार्ट पर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज़ द जीनस नेम। फर्स्ट पार्ट जो जीनस नेम है एंड सेकंड पार्ट इज़ द स्पीशी नेम, और सेकंड पार्ट जो स्पीशीज नेम है। और स्पेसिफिक एपिथेटिक। दिस बायनोमियल सिस्टम्स वाज एक्चुअली प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम इसे प्रपोज किया गया बाय कैस्पर ब्यूहेन्स 1623, बट ही डिड नॉट मेक इट एप्लीकेशंस कंपल्सरी। ये जो है नहीं बनाते अपने एप्लीकेशन कंपल्सरी। लेटर इट वाज लिनियस 1753, ए स्वीडिश बोटेनिस्ट हु
adopt the binomial nomenclature in his species Plankthrums 1753, and hence the credit went to Linnaeus. Therefore, 1st May 1753 is regarded as the beginning date of the scientific names of all living beings, including plants. Little length is chosen for scientific name. Certain rules are to be followed in giving the binomials. Binomial, the first letters of genus should be capital and the first letter of the species should be small letter. Small letter में, for example, mango, Fira indica, and Cocos neckifera. Whenever these names are handwritten or type written, they are to be underlined. You underlined the names should be in Latin language, or if the names are derived from any other source, they are to be Latinized. The genus names always to a non. The species names will be an objective and hence it usually tell as the characters or home of the place. For example, Solinum nigrum, black, and Mangifera indica, Indian. The scientific names are usually followed by the names of author in abbreviations. Valid published it for the first times. Example: Mangifera indica L. Linnaeus. International Code of Binomial Nomenclature. International Codes of Binomial Nomenclature (ICBMs), or the code is the Parimers constitute body of the International Botanical Society Congress. It means job is to look after the plant nomenclature. Plant nomenclature के तौर पर देखेंगे और बहुत extent and extinct taxa. The first code was held in Paris, France during 1867 under the guidance of A. P. D. Condillo. The basis for the code has been drawn from the Condilla theories elementary de la Botanica and also from the Critica Botanica, Fundamenta Botanica, and Philosophy Botanica of Linnaeus. Since then, for every 6 years, the International Botanical Congress (IBC) meeting is held to discuss the various aspects of nomenclature and published as the code. The latest editions of Code 19 editions was held in Shenzhen, China 2017 recently, and which supersedes all previous editions. उसके बाद the code ICBMs is mainly consisting of paramembers and three divisions as follow. The code Shenzhen Code 2017. The Brambles botany requires precise and simple systems of nomenclature used by botanists in all countries. Aims of the code: the aims at the preventions of the stable method of naming taxonomic group, avoiding or rejecting the use of name which may cause error or ambiguity. Further, it aims at the avoidance of the useless creations of new names. The Parambles botany requires precise and simple systems of nomenclature used by botanists in all countries. Aims of the course: it aims at the preventions of a stable method of naming taxonomic groups, avoiding or rejecting the use of name which may cause errors or ambiguity. Further, it aims at the avoidance of the useless creations of new names. उसके बाद divisions and principles, divisions rules and of priority, effective valid publications. उसके बाद holotypes, isotypes is the type specimens or other element used or designs by the author in the original publication as the main nomenclature type. Original publications में main nomenclature type. At present, it is essential that the holotype designate for a newly described species by deposited in a national herbarium like the
Central National Herbarium CELs, Calcutta of the BSLs isotypes is the duplicate specimens of a holotype. They are plant forming of same gatherings as the holotypes and gatherings same times in the absence of holotype isotypes and nomenclature types. Usdibas and sign type is one or two or more specimens studied and cited by the author when the holotypes is not designated by him. ये डिजिग्नेट नहीं होते by him. The paratype is a specimen cited with the original descriptions in the additions to the holotypes when the author fails to designate a holotypes और the holotype is missing. Holotype जो missing होते हैं and the lactotypes और new type is selected to serve as a nomenclature type. Lactotype is a specimen selected from those cited by the author with the original's description. Original's description neotypes is selected only when all the original specimens collected and cited by the author missing.